Uh, it's my great pleasure to be at NIT Jalandhar and to be in your beautiful campus and interact with all your students. And like you, I'm also an engineer. I've done my BE from DC, Delhi College, and currently I'm working with a startup called Room. And so my journey has been, of course, towards multiple companies. I also did my MBA from FMS Delhi. And after that, of course, I endeavored to write my first book, which is India's first season style book, The Class of 2006. So today's session will discuss a bit about the book, something about the learnings in college life. And then, of course, we have a lot of things on the product management side as well. Okay, so this is a free Q&A session. You can ask any question in the chat bot, and we're happy to answer any question that you have. So while more people will keep on joining in, I think we'll start with the session. And let me just share my screen. Yeah. So today, of course, it's a Ask Me Anything session. Anything about startups, product management, or anything about general life. And happy to answer any questions that you have. Uh, so the flow will be, we'll talk about a bit about the book, okay, as I mentioned. Then we'll cover the basics of product management. Then we'll do a Q&A. We'll also talk about some basics of product management at startups. And then, of course, we have the bonus, which is your internships and one-on-one sessions with me. So we'll continue them as we go along. So a bit about the book. Of course, so the idea is that see, like you. I'm always been very ambitious. Okay, I wanted to do well in my job, wanted to do well in my college, wanted to get the best placement in college. Okay, but we realized that a lot of times you work hard, or let's say you move towards your goal, but you may not be successful. Okay, so the idea of the writing this book was like when you enter college life, this is the first time you enter into a life of freedom. Okay, a life away from home where you make your own decisions, you develop your own friend circle. So there are small learnings, very small learnings in your journey that go along in making you a highly successful professional. Okay, so we'll discuss more about them. And so this book, of course, has been written on the same theme: 18 small learnings that can help college-going students and working professionals to outperform in your college life, outperform in your work life. Okay, and this book, right, of course, is the ideal read for people like you who are CAT aspirants, engineering aspirants, who are first-time readers, and of course, you can outperform in your corporate life. And it's written in a very easy format. This is season one, which talks about the college life inspired from my real life journey, and you can binge read within 4 hours. So it's available as an ebook on Amazon, and we'll talk more about it as we go along. So इसका जो trailer है, so you can watch the trailer on the same channel which Manshu shared, and of course it was launched by Mr. R. Madhavan. So Mr. R. Madhavan, who is from Three Idiots and Decoupled, so he was there at IIT Kanpur and DTU, where we launched the book among 500 plus people, and the book has been getting good response. So we'll discuss some scenarios from the book that could be useful for you in your college life. So just a bit about the book, you can buy it from Amazon. It's available for 99 rupees only. And if you have Kindle or you don't have Kindle, that's fine. You can still read it as an ebook on your laptop. And the good part is it's only around 200 plus pages, and you can binge it within 4 hours. So even if you are, let's say, in Amazon US, or any of your friends are outside India, you can still buy the book. And that was the idea actually, because we wanted more and more people to access the book. And of course, you can read it on Kindle. It's at 99 rupees. And if you don't have Kindle, still it's available. And it was launched at 125 rupees price. So it's only 25% off for the next couple of weeks that we are doing. And you can see it's cheaper than a CCD coffee or a Ola cab trip. If some of you people use Ola Kindle Unlimited, then you can actually read this book for free. It's part of the Kindle Unlimited series as well. So we'll talk about a bit about the book now. Okay, and so you see, a lot of times you realize, okay, you set a goal. Let's say you want to get the best placement in college. Now the point is, there are a lot of obstacles, there are a lot of variables in that equation. Okay, and even if you put the right effort, sometimes you're not able to achieve them. But then small learnings, like for instance,
when you're, let's say, going for a movie and you're convincing your friends to go along with you. So this ability to convince is very, very important. Okay, when you convince your friends, this is how an everyday corporate life look like. So for instance, you have to convince your boss to give you a promotion, or you have to convince your team leader to give you the best project in the pipeline. So when you are doing these small things in your life, in your college life, these actually compound over a period of time to become part of your personality and therefore enable you to outperform. Another part is that only 0.001% of people around you actually outperform. For instance, how many people from you probably would go to IIM Ahmedabad or let's say Harvard, or let's say you want to become a startup CEO. Not everybody can do that. Okay, let's say one in 1,000 or maybe less than that will be able to do that. So the idea is capture the small learnings in your life, okay, while you are in college or in your community, while you're talking to your friends, and when you incorporate them in your work style, they become very, very powerful as we go along. So I will just share a snippet from my book. Okay, just let me share the screen, and I would like to just discuss about one or two scenarios that could be useful. So we'll do a book reading there. Just give me a minute. Yeah. Yes. So I'll also share the first chapter of the book with you. So happy you can take out time to read it. At maximum 30 minutes it will take for you to do that. And as you can see here, success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. So while in India we're very, very focused on outcomes, but actually it's the learnings that is very important. And I have also written the book with the same style, where of course there are 18 episodes in the book, and every episode was roughly 15 minutes long, so you can read within 4 hours. And this is a bit about, of course, the book. So, for instance, we have read about people getting 2 crore packages, okay, or somebody getting crores of money through YouTube channels, okay, somebody getting a Nobel Peace Prize, or somebody in India, in the US, becoming the CEO of Twitter. Now, the point is, not everybody does that, right? And that is what I'm calling as outlier. An outlier is somebody who is outperforming from his batch of data points, and therefore we call them an outlier. So the point is, not everybody becomes an outlier. And I've been trying to analyze. So I've worked with 5 different companies. I've done my MBA from FMS. I have interacted with 3 CEOs in my work life, and I've worked with people from all top colleges in the world, Harvard or INSEAD or any other college that you name it, and from people from 10 nationalities. So I've been trying to identify what is the reason that makes them successful, and that is what I'm trying to write in this book. That you need to build the outlier DNA. Okay, outlier DNA is that the DNA slowly develops in your physical and mental brain that helps you to outperform. And it's a journey that matters. Okay, while you are doing some things, it's a journey that matters because life is a marathon, not a 100-meter sprint. And you will try as you go along, you realize that it's a combination of multiple 100-meter sprints. Okay, so for instance, you are in college now, you'll go to your first job, then you'll go to MBA, then let's say you'll go to your second job. So every sprint that you do, you learn something and you move along. So that is how we have written this. And the book has 18 learning boxes. Okay, so it's a self-help fiction book, and we have tried to capture the learnings in the book that you can while you're learning, while you're reading the book, you will get to know that. And it's written from the eyes of Rahul, who is a 60-year-old billionaire, and he is passing on his life learnings to his grandchildren. So this season one is about his first year journey, and so this season one is about the first year journey, and he's talking about how he's able to develop his skills at the end. So just give me a second. Yeah, so we'll talk about the first chapter of the book, which is about beginner's luck. Okay, and we're talking about this is the start of the journey where people enter into college and where you meet your roommates. So this chapter of the book I will give you for free, and you can also go through this book on Kindle, which is a free chapter. So as you read the book, you realize that there are some learning boxes in the book that you can interact and use on and learn from the book. So I think we will
discuss more about the book as we go along. But there are some giveaways that I wanted to share with you. So we are giving away 5 books as part of the promotion. So anybody who's interested can tag me on LinkedIn or Insta. And as a result, we will be able to give you 5 books. And people who read these books, there are 30-minute sessions you can do with me this weekend. For this, the deadline is today, end of day. So anybody who's interested can tag me on LinkedIn today or Insta. 5 books we will giving out for free. And 2 30-minute sessions we will do. These will be Ask Me Anything sessions. We'll do it online. So, of course, this is about the book, and happy to discuss more about that. And I think while we move towards the next part, which is the PM sessions. Okay, so we'll discuss more about the PM sessions, but before we move along, I wanted to check what are the questions that you have in mind. So you can type your question in the chat box, and I think I will ask Himanshu to help me with the Yeah, question. guys, please type your questions as till now for the 1/3 of the session we have conducted. Any questions you have, you can type in the chat box and we'll be answering that. Yeah. So I think product management is one of the most coveted roles today, and happy to see more people getting interested in that. So we'll talk about the basics, but any question that you have, we'll wait for that. So next 30 seconds, you can type your questions, and then we will take them ahead. So we have a question. What were the difficulties you faced in your life and how you tackled them? Okay. So of course, I was always very ambitious, and I wanted to get the best position in college. I wanted to top the college. Okay, and so I will talk about one instance which is also there in the book. So while in my 4th year of college, I wanted to get the best placement. Like for instance, probably for you want to go into Google or into Amazon or Microsoft. So I wanted to also go towards Citibank, which was the highest paid campus placement. Now, while I was trying for that, I worked very hard towards preparing for that, talking to a lot of seniors, talking to a lot of interviews online. But I was not able to crack it. Okay. So while I got a good job at college, unfortunately, I was always in the mind that I wanted to crack Citibank. So I was always trying to figure out how to apply, how to work towards that. So finally, after 1 year, I got to apply for Citibank, and I was unable to again crack it. So now, this at this point of time, the difficulty that I faced was I wanted to go into Citibank. Unfortunately, I realized that the skill set that I had was very different. So they were basically offering a profile towards financial investment banking, but I was more focused towards creating stuff. So I think that helped me to understand that this is not actually my focus area, and therefore I realized, and therefore from there I moved towards product management. Okay, so my journey towards product management. So I would say if one door is closed, something else opens, and as a result, more and more people actually get to know what they really want. So I think every door opens up a new difficulty, and every difficulty opens up a new door. So I think the idea is keep on working towards your goal, and every journey will help you in your longer life journey. So yeah, that is about that is the answer. Any other question, Himanshu? Yes, so we have one more question. Hmm. That is regarding product management. Guys, Okay. we'll discuss about product management later. Like Yeah, for yeah. So what is the question, Himanshu? it's about why should not do. No, wait a second, so this is not a valid question. I think it's fine. I think we can start. We can start the session for PM. Okay. So of course, Only one question they're having, sir. How to get into the role of PM as intern, product management as intern? okay. So I think today there are more and more opportunities to do that. Okay, a lot of a lot of big companies and startups today are offering internships, and people are getting offered as live projects. So the first and foremost thing you need to do is get to develop some basic knowledge about PM, because nobody will hire somebody who's a fresher. Okay, so try building something of your own. Okay, or let's say take a course or take some learning session, so that when somebody interacts with you for a, let's say, an opportunity, you know something about product management. Okay, so first thing is, so develop some basic knowledge, do some courses, talk to certain seniors who are in product management, and then you keep on applying for startups today, because especially
so if you're looking at big startups, okay, let's say Flipkart or let's say Droom, we have very structured internship programs. Okay, they happen typically in the month of April to June. But the point is with startups, the smaller startups, they have requirement every month. Every I would say every month there are internships being floated. So if you have some people in your network, you can reach out to them for with your CV. And if not, you can of course continue reaching out to different founders or startup people who are looking for interns. And I would say that don't be rigid with your idea of internships. Let's say you want to work in a e-commerce startup or an AI startup. Let the first internship more be about understanding how startups work, and then pick up on your choice. So the idea is keep on applying, okay, keep on interviewing with a lot of startups, and I think today there's more and more opportunity for actually getting hired as an intern. And don't be rigid on your role, startup, or stipend, okay, because I think at your age it is the learning that is more important. Okay, so yeah, so that is the question. That is the answer. So keep on applying, keep on learning, keep on talking to people, and keep on building your skills because everybody wants somebody who has knowledge of PM. Yeah, yeah. So, Himanshu, we can start, I think, for the session. Yes, one more question. What's the basic difference between product manager and product designer? Okay, okay. See, when you're developing a product, there is something called UI UX design. Okay, when you develop a product, you need to first understand who are you developing for, what are the user personas, and then there's a design team which develops the wireframes and the journeys. Okay, and the design overall can be developed in different tools, software, everything is there. But a designer's core job is to design the journeys of the product, whereas the product manager is the overall head of the product, and design is only one part of his overall journey. Okay, so he has to first understand his personas, his user issues, pain points. Okay, then develop the entire journey along with the designer. Then he works with the technology team to develop the product and then deploy the product. So design is only one part of the overall product management journey, whereas product management is about everything from conceptualizing to launching the product and then managing it over a period of time. So you can say it's a subset of designing is a subset of product management. Yeah. Yes, so we could start with the session. Okay. So folks, we'll cover about certain things here. So I mentioned the key topics. So one is what is a product? What is the difference between product versus product management? Then different types of product. What is the high-level view of the development process? The success measurement metrics, and then how do you crack into product management? So I think we'll move towards the first slide, which is what are the different kind of products in the pipeline today. So see, product is anything which is a solution to a problem. Okay, so there can be a hardware product, a software product. Okay, so as you can see here, this is an ice cream. This is also a product. So you can say it's an FMCG product. This is a phone. Okay, phone is also a product. And on the third end, you can see the website of IRCTC. This is also a product. This is a website. This is a digital product. Okay. So everything of every of them is solving a pain point for a certain user segment. Okay, and therefore they will all be called products. But today we'll be talking about the software products. So so we'll see. We're not talking of a theoretical session here. So we'll talk about what is product, but we're not really going into the definition of a product. Okay. So even in your interviews or let's say in your sessions, nobody will ask you what is a product. But still we'll talk about a product is a solution to a problem which is faced by certain pre-identified set of users. Okay. So ये A से B जाने का जो तरीका है, उसका जो solution है, that is the product. Okay. It could be a technology or non-technology solution, and every product will be governed by a success metric. Okay. For instance, अगर if it is revenue generating, तो sales will be the metric, downloads will be the metric, monthly active users will be the metric. So it all depend on what kind of product you are building and what is the nature of the product. Okay. And it like any kind of company or any living organism, it goes through a life cycle. Okay, so it will go through introduction stage, growth stage, and every stage will have a different metric. Okay, and product management is basically that covers everything that includes developing the product from scratch. Okay, so it includes identifying the users, their pain points,
designing and developing user journeys, getting the product delivered, and then measuring user behavior. So it is everything about developing the product, launching it, and then measuring the success to ensure that everything is built on track. So that is a product. Okay. So we'll also do a product tear down today. Okay, key product hota kaise? Because see, a lot of the time when you get interviewed, people will ask you your favorite product. Okay, for instance, अगर आप product use करते हैं WhatsApp or let's say use Amazon. So the first thing that I will ask you is what are the top two to three features that you like about it, and what are the two three things that you like to improve about it. Okay, so it's very important to understand that while let's say you're interviewing for a startup or any company, we want to understand your logical thinking. Okay, and how will you analyze the different features of your favorite product. Okay, so we'll do a very high level product tear down, and I've picked up IRCTC because I'm sure everybody would have used IRCTC. And in typical parlance of IT management, it's a ticket booking and a management platform. Okay, let's say you are in college and if you're building a project, you will call it like a ticket booking platform. So IRCTC in general is helping people to book travel from A destination to B destination, and that can be for different classes, different timings, different number of passengers. Okay, so the user persona is a person you are building for. It could be a business, it could be an individual, and here in this case, it's for an individual typically. It's a customer-facing website or an app where people go to book the tickets. Okay, so what is the pain point? Now, why don't you actually go to the station and book your ticket? Okay, why don't you actually go to the New Delhi station and stand in the queue, okay, in a long queue, and then wait for your chance to get a ticket, which you're not even sure of getting? Okay, so the point is that it offers the convenience of booking from home. 100% online journey allows you to see whether the ticket is available or not, and then you can actually book the ticket online using your payment gateways. Okay, so the pain point you're solving is high level is the travel. I want to travel from A to B, and this platform is allowing me to book a ticket for that on the Indian Railway journey. Okay, so whenever you are analyzing a product, first understand what is the user persona, what is the pain point you are solving, and then of course what are the benefits for the product. Because every year millions of apps are getting built, but still you're only using not even 1% of those products. Okay, so you have to understand that for a product to be successful, you have to understand fully the user personas and the benefits. Okay, okay, so benefits here are you save time, you do 100% online booking and 100% payment. And the business model here is that that IRCTC earns whenever you book a ticket on the platform, plus the service fee, which is the payment gateway fees, plus the ancillary bookings. So when you pay out 1 or 2 rupees for insurance, okay, or let's say you book through SBI credit card, so all that goes into the money or the revenue for IRCTC. Okay, so this is about the tear down, high level product tear down of the product, different, and of course we can talk about different modules. We can talk about the different funnel metrics, but I have tried to keep it basic today. But the idea is that when I talk to you about your favorite product, you should be able to break it down. So any question here until now, Himanshu, anybody wants to ask anything about it? Happy to answer about it. Yes, sir, having one or two questions. Yeah. Like there's a general question how MBA helps in long run. Okay. Okay. Yeah, ये जो question है ना MBA वाला, this is a good question actually, because in our interview, especially in MBA, this is a very standard question. Why do you want to do an MBA? Okay, so there's a theoretical answer to it. Okay, and then there's a practical answer to it. So आपको दोनों बताता हूँ. Theoretically, an MBA is a condensed module of all the learning you would need to run a business. Okay, whether it's sales, operations, product management, or anything, finance. So theoretically, it's a condensed module of 2 years. Okay, where good professors come and teach you, and they'll test you on your different skills. Another part is, of course, the peer learning, which again I talked about in the book, that you get to learn from your peers. That is a theoretical somewhat answer. But the practical answer to this question is, see, when it's about building a business. Okay, product management is also about building a business. Okay, so it gives you the way to think and discover the different issues that will help you to eventually run a long-term business. Okay, and that is actually what is important when you go higher in your career. Okay, let's say I'm 10 years into the journey and I'm a director. Okay, for me, the important question today is who am I building for? What is the value I'm giving to the user?
Okay, and what is the revenue I'm generating? So an MBA helps you to give all that information in a condensed knowledge, and then over a period of time, you get to apply them and get a go ahead over those people who are not MBAs. Okay, so the idea is extract maximum what you can do from the MBA, and then as you go along, it will the difference will show. Okay, the difference will show among those people who have done well and those who have not done well. So yeah, so the MBA answer is about getting the maximum learnings in a condensed format, and then using it in the to fast track your career and your goals. Yeah. Okay. Any other question, Himanshu? No, so you can continue. Okay. So, of course, what is product management now? So, product is about solving a problem for a particular set of users. And I mentioned about product management being the overall journey of building that product. So, what happens is that in a typical startup, or let's say in a typical business, of course, there is a design team, there is a tech team, and there is a business team. Okay. So, the product management is the guy who's interacting with everybody. And therefore, you come at the cross section of this team. Okay, so you need to talk to them in their language, and therefore why we call it product management as a CEO or a mini CEO of the company. Because you not only understand technology, you understand business, you understand design, you understand and talk in the same language. Okay, and your typical day-to-day job is building platforms, features, okay, building iterations to launch your product, and then of course a lot of initiatives you need to do to achieve your business metric. For instance, if you want to increase sales, what are the different initiatives you need to do to increase your sales? Okay. And typically, most people do not own a P&L responsibility. For instance, you're not responsible for revenue directly, but you work with a business team who is responsible for revenue. So typically, I would say you're jack of all trades, but master of none. And you work at the intersection of these three verticals every day, day and out. Yeah. So just a high level view of how you build a product. So of course, as I mentioned, once you identify the user, you need to develop the vision of the product. Why are we building the product? Okay, the vision, mission, and strategy. And then, of course, we need to build the roadmap. Okay, so let's say now you identified I want to build an IRCTC. Okay, now the roadmap is you can't build IRCTC in a day, right? So you need to develop different sprints or features that you need to develop. You'll make a list out of that, and then you need to prioritize which one to go first. And then you divide them into 2 weekly or 4 weekly sprints that will help you to reach your goal. Okay. And of course, when you do that, of course, there will be certain success metrics with business teams, and the UI UX design, program management, QA testing, all will be required to ensure that the product gets deployed. So once the product is developed, there is a bug testing, there is a QA testing or a quality assurance testing that goes into developing and launching the product. And then as you get more and more feedback from the users, there will be new iterations that you will keep on building as you go along. So a good product takes years to build. It doesn't you cannot build an app, let's say, in a few days. You need to build a good product it takes a few years to develop a good product, and the learning that you get from it as over a period of time, they help you to build new iterations. So it's very important to understand the success metrics of the product, because you're building for a reason. Okay, and every product has a different metric, whether it's B2B or B2C. Okay, whether it's an AI based product or let's say a WhatsApp like product, and it's also a function of your product lifecycle. Okay, so typically when you are developing the product and you introduce the product, it's about active acquisition and activation. Okay, so this is a funnel. So you need to track across acquisition, activation, revenue, retention, and referral funnel. So there are 5 stages of the tracking. And in the typical introduction stage, it's about acquisition and activation. So for instance, like when you downloaded WhatsApp, so were you able to actually make a message or talk to your friend on the over the WhatsApp? So that's an activation program. Okay, because if you downloaded the app but you did not use it, in that case it's of no use. But as you see more and more people starting to use the app, then what's become important is the growth. Okay, then we'll track about revenue, what is the retention, how many people keep on using the product month on month. Okay, but that's also a function of your business model, user personas. Okay, then of course it will decide your success metric. So typically for people who are revenue focused, they look at sales, transactions, okay, and the number of successful paying users. And then of course for non-revenue, you have monthly active users, and weekly monthly retention is very important, because we want people to keep on using the app. And of course there are different kind of variations depending on
whether it's a introduction based product or a maturity based product. But yeah, there are different metrics you need to track. Yeah, so I think that was about basics of product management, but happy to answer any other question that you have about product management, different product funnel metrics. And then, of course, happy to answer any question about startups or anything. Yeah. Yeah, so there's one question from a student, how you learn time management, as it's the basic thing to build career in any field. Yeah, time management, I think a lot about it is about your personal discipline. Okay, when you're highly motivated to reach a certain milestone, then you have to position your time accordingly. So typically, how I do is, let's say I want to reach a certain goal, then I divide it into different milestones. Okay, and then every milestone has a specific time. So for instance, I want to launch a different app. It's a new app, and I have the timeline is 2 weeks. So what I do is I keep very strict timelines and milestones that ensure that every milestone is on track and that time management happens accordingly. Okay. For instance, but let's say if I'm not in the deadline, I'm missing the deadline, then of course I keep a buffer to ensure that the deadline is not missed. So when you plan, I would say it's about planning and personal discipline. And it's very important, especially in startups, because startups do not have a lot of buffer. Okay, they want people who can deliver fast, who can deliver speed to market. And therefore, when you are planning for your time, ensure that you have built in the buffer, you have built in all the worst case scenarios, you have built personal discipline, you have built all the issues that you will face. So I think it's about planning, personal discipline, and the motivation that will lead you to a personal goal. So सब कुछ मिला के आपको time management करना होगा. Otherwise, एक भी issue आता है, you will lose track of your goal, and it will affect all your other timelines. I'm sure कि कुछ college students आप पढ़ रहे होंगे, CPM method होता है, a lot of planning methods are there. But typically हम life में जो plan करते हैं, it's very important कि milestone रखो, और अगर multitasking कर रहे हो, तो ensure करो कि वो सब चीजें mapped है, buffered है. वरना ऐसा ना हो कि आपने कॉलेज स्टार्ट किया, 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, इट विल अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी, जिससे अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा. So it's about planning, personal discipline, and motivation. Yeah. Got it. So one of the students have asked that the Zoom also sponsored roadies. So you were able to talk to the people of roadies. नहीं यार, so when I joined Drew, then अपने रोडीज का ये जो कनेक्शन था, तभी हमारा कोलैबोरेशन बंद हो गया था. But at that point of time, we also sponsored Big Boss, और Big Boss भी काफी पॉपुलर है, so I was able to meet certain people there. And उसके बाद, of course, now we are expanding a lot, and we hope to do more collaborations in the future. So yeah, but I was not able to meet somebody in the roadies. But my जो मेरे boss है, who is Sandeep Agarwal, he is a prominent personality, and of course वो interact करते रहते हैं. He was also part of the MTV Dropout, जो कि popular series थी a couple of years back on startups. So unfortunately मुझे इतना मौका नहीं मिला, but I hope so मिलेगा आगे. Or like, and Yeah. so we're having like my personal question. It's like, Okay. what are the careers and like options as in product manager, in product management? How can we grow our careers as in product management? So actually, see, product management as a career option काफी develop हो रहा है इंडिया में. इसके I would say 3 different tracks हैं. Okay. So there's a technical product manager, then there's a growth product manager, and there's a data product manager. 3 different product managers में divide कर सकते हैं इसको. ठीक है. Technical product manager somebody जो काफी IT oriented है, जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, फीचर्स डेवलप करता है, उसका अपना बिजनेस से लिंक नहीं होता. ऑल्दो दे अंडरस्टैंड कि बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, बट वो टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर कहलाता है. ठीक है. दे आर टिपिकली डेवलपर्स, एक्स डेवलपर्स होते हैं, तो दे वेरी हाईली फोकस्ड ऑन आईटी फीचर्स. ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर वो होता है, दे आर फोकस्ड ऑन सर्टेन मेट्रिक्स. सो जैसे मुझे एक्टिवेशन बढ़ाना है, आई नीड टू इंक्रीज रिटेंशन, तो दे वर्क ऑन इनिशिएटिव्स. थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेशन लेके आना पड़ता है कि मुझे ये अचीव करना है, तो काफी लॉजिकल एनालिसिस थिंकिंग भी काफी आती है इसमें. ठीक है. तो वो ग्रोथ वाली फील्ड काफी पॉपुलर हो रही है आज के टाइम में. इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट लेड ग्रोथ. ठीक है. आपने रिटेंशन प्रोग्राम लगाया, लॉयल्टी प्रोग्राम लगाया, ठीक है, लेट्स से आपने रेफरल लगाया, ये सब आपके ग्रोथ प्रोग्राम में आते हैं. देन देयर इज थर्ड इज डेटा प्रोग्राम, डेटा प्रोडक्ट मैनेजर. आज के टाइम में एआई एमएल काफी पिक हो रहा है. ओके. एंड देयर लॉट ऑफ डेटा इन द सिस्टम थ्रू इंटरनेट, जिसको हम बिग डेटा भी बोलते हैं, बिग थिंग्स, डेटा ऑफ थिंग्स भी बोलते हैं. तो डेटा पीएम इज समबडी हु एनालाइजेस दिस डेटा, फाइंड्स आउट डिफरेंट क्लस्टर्स एंड क्रिएट्स डिफरेंट पैटर्न्स. ठीक है. ये पैटर्न्स हमें हेल्प करते हैं टू क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर द लार्जर सेट ऑफ ऑडियंस.
फॉर इंस्टेंस जैसे मैं खुद एक AI बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करता हूँ, इट्स कॉल्ड OBV, ऑरेंज बुक वैल्यू। एंड वहाँ पर हम आपको विद इन 10 seconds वी गिव यू द वैल्यू ऑफ एनी यूज व्हीकल। तो वहाँ पर हमने जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज किया है, काफी सारा डेटा कलेक्ट करके ऑनलाइन हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, और उसके बेसिस पे हम आपको डेटा देते हैं। तो 3 डिफरेंट ट्रैक्स चल रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल, ग्रोथ एंड डेटा। और टिपिकल जो इनका करियर पाथ होता है, हर जगह एटलीस्ट लेवल्स टिपिकली हो क्या होते हैं, स्टार्ट्स विद एन APM, यू बिकम एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, जो टिपिकली आउट ऑफ कैंपस पोजीशन होती है। यू स्टे देयर फॉर 1 or 2 years, यू बिकम अ PM, प्रोडक्ट मैनेजर, and then there's a SPM, senior product manager. As you become a SPM, typically ये SPM एक head of product बन जाता है, ठीक है। तो आप 3 से 4 साल में पहुंच जाते हैं SPM में, डिपेंड करता है स्टार्टअप है, कितनी कितनी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन इसके बाद टिपिकली वेरी करता है कुछ कुछ जगह, बट देन इज कॉल्ड अ ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, GPM, देन डायरेक्टर, then AVP, VP, and then typically the head of product, this is called CPO, Chief Product Officer. तो 6 से 7 लेवल्स होते हैं और 8 से 10 साल का करियर पाथ होता है। एंड डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट पिक किया है, P2P है, B2C है, ठीक है, ऐप है, वेबसाइट है। तो दैट इज ऑल्सो गोज इनटू अंडरस्टैंडिंग कि आपका कोर एक्सपर्टीज क्या है। तो करियर पाथ काफी सारे हैं आज के टाइम में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बहुत जॉब्स है। एंड आई थिंक एज मोर एंड मोर पीपल एंटर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डेवलप होता जा रहा है। या तो ये डिफरेंट डिफरेंट करियर पाथ्स हैं, डिफरेंट जर्नीज हैं। और आई थिंक लार्ज पार्ट है कि आप कैसे ड्राइव करते हो, आप पे डिपेंड करता है। Okay. So या there's another question that a student is saying as an observation in the session that a product manager is involved at every step of for a successful product. So do a PM has to like product manager has to have a good knowledge at every field. देखो, अगेन क्वेश्चन मैंने आपको बताया 3 तरह के प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है। टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर इज टिपिकली नॉट वेरी फोकस्ड ऑन बिजनेस, बट द पॉइंट है स्पेशली पीपल लाइक अस फॉर MBAs, बिजनेस नॉलेज होना एसेंशियल है, ठीक है। बिकॉज अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आपको नहीं मालूम कि क्यों बना रहे हो, तो हाईली लाइकली कि यू विल मेक डिसीजंस जो कि इनकरेक्ट हो जाएंगे या प्रायोरिटी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो फॉर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, किसी भी टाइम पे वी हैव 3 to 4 people डिविजन्स टॉकिंग अबाउट कि फीचर बना लो, वी कैन डेवलप दिस फीचर और नॉट। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रायोरिटी क्या है, दे विल डिसाइड, एवरी पर्सन विल पुश यू फॉर द फीचर। बट एज अ PM आपको प्रायोरिटाइज करना है कि पहले क्या पिक करो, बिकॉज सबकी जो बैंडविड्थ है वो फिक्स्ड है, स्प्रिंट फिक्स्ड है, टाइमलाइन फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस के बारे में नहीं जानते, तो हाईली लाइकली है कि आपको डिफरेंट टीम्स पुश करेंगी, आप उनको पुश बैक नहीं कर पाएंगे, और एज अ रिजल्ट यू विल बी क्लॉग्ड विद वर्क, ठीक है। सो एज अ गुड पर्सन, आई वुड से गुड PM ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। बट आई थिंक गुड पार्ट इज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न कर लेते हो, ठीक है। आप कॉलेज से निकलोगे, हो सकता है थोड़ा फ्रेश हो गया, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम होगी। बट आज के टाइम में आप इतनी इंटर्नशिप्स कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आई थिंक इतना कह सकता हूँ कि यू आर मच बेटर प्लेस देन अस, बिकॉज 10 years पहले इतनी इंटर्नशिप नहीं होती थी। तो वट एवर यू आर डूइंग, कंटिन्यू टू डू दैट, एंड आई थिंक वो जो लर्निंग है आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्यूमेन, और अल्टीमेटली आप उसको समझ ही लेंगे। थोड़ा सा इट कुड बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस इन द बिगनिंग, बट आई थिंक इट इज ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एस्पेक्ट, बट नॉट अ नेसेसरी एस्पेक्ट। कि अगर आपको मान लीजिए पता नहीं कि ऑटो ऑटो कॉमर्स क्या होता है, तो ये नहीं कि आपको हम रूम में नहीं लेंगे। बट अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज, ब्रांड की नॉलेज है और आप पिक करना चाहते हो, तो हम आपका इंटरेस्ट लेवल देख के आपको पिक कर सकते हैं। तो बिजनेस की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बट इट इज गुड टू हैव। Okay, all right, sir. या And so there's another question that uh, MBA after BTech, is that a myth to do for like particularly to do to get a success, or it's about something based on interest? फिर इंडिया में मैं, जैसे मैंने बुक में मेंशन किया है दैट वी हैव लॉट ऑफ हर्ड मेंटेलिटी, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि हमें क्यों करना है, हमारे सीनियर्स हमें बोल दिया, हमने कर लिया, ठीक है। मैं इस बुक में भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा मत करो, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट, जैसे सिटी बैंक का एग्जांपल दिया कि मुझसे नहीं हुआ वो, और मुझे डिफिकल्टी हुई। सो मैं इतना बोलूंगा कि मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। MBA is one of the career tracks to life में available है, but then there is IAS, there is IAS, there is GATE, you can start your own business, you can do, आज के टाइम में तो lot of people are doing freelancing today, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, ठीक है। तो MBA करना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप करना चाहते हैं, तो पहले अंडरस्टैंड करें कि आपके जो स्किल सेट्स है कितना अलाइंड है, ठीक है। डोंट रन आफ्टर इट बिकॉज योर सीनियर इज डूइंग इट और योर फ्रेंड इज डूइंग इट। तो आप वो समझें कि लेट्स से मैथमेटिक्स आपको कितना इंटरेस्ट करती है, बिजनेस के बारे में क्या आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट कर रहा है और आपके लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड है, तो आप MBA जरूर पिक करो, बिकॉज MBA इज अ वे टू फास्ट ट्रैक योर करियर, ठीक है। अगर आप MBA नहीं करते और अगर आप MBA करते हैं,
तो डिफरेंस जो मैंने देखा है, एमबीएस का करियर फास्ट ट्रैक होता है, नॉन एमबीएस का करियर फास्ट ट्रैक थोड़ा कम होता है, बिकॉज अकॉर्डिंगली इंडिया में स्पेशली डिग्री बेस्ड कल्चर ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो एमबीए करके आता है तो डेफिनेटली इसको हेल्प मिलती है। बट अगर आपने नहीं करा है, और आज के आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स में देखा गया स्टार्टअप्स में काफ़ी डिफरेंस आया है, बिकॉज दे नॉट एमबीए के बिना भी आपको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक देयर आर डिफरेंट वेज। वन इज की यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ ओपन। अगर आपको एमबीए करना है, आप ट्राई करिए। अगर आपका स्किल सेट है, आप करना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर गुड आईएम्स एंड गो देयर। बट अगर आप नहीं कर रहे हो यानी जॉइन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो आप अपना यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि मुझे एमबीए हेल्प करेगा कि नहीं, एंड देन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। बट इन जनरल मैं बोलूँगा कि एमबीए करना इंडिया में नॉर्मली कर ही रहे हैं आज के टाइम में, एंड अच्छे कॉलेज से करना ज़रूरी है। सो ऑलवेज टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द कॉलेज एंड वेदर योर इंटरेस्ट आर अलाइंड। तो ये तो मैं बोलूँगा कि करना तो आज के टाइम में ज़रूरी हो गया, बिकॉज हर कोई कर रहा है। बट स्टिल किस में करना है, मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस में करना है, यू कैन टेक अ कॉल। Okay, so as you know, as a college students, we are college students like from first to fourth year. We are always having something in our mind, like we must do coding, we must do something related to management, we must do something related to everything. Like we want to be present everywhere, but we're not doing that. So what exactly the the entire scenario, and how can you relate that to your book, that what you have written? That यस, could सो इसमें बुक में आई थिंक बुक में मैंने अपने कॉलेज लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा है कि जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हैं, ठीक है, आप ये अपने डिफरेंट फ्रेंड से मिलते हैं, फिर आती है आपकी प्लेसमेंट, फिर इंटर्नशिप्स आती हैं, फिर आपके फेस्ट आते हैं, फिर आपकी सोसाइटीज आती हैं, तो बहुत कुछ करने को है। ठीक है, तो मैं इतना बोलूँगा कि उसकी लर्निंग अलग अलग है, आप लर्न कर सकते हैं। और अगर आप एक कॉल लेते हैं कि मुझे लर्निंग करना है, तो वो टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है, कि लेट्स से आई वाज टिपिकली मोर इंटरेस्टेड इन स्टडीज, बट मैंने सेकंड थर्ड ईयर में कॉल लिया कि आई विल वर्क अलॉट ऑन सोसाइटीज, जिनसे बाद में मुझे हेल्प किया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप जो भी चीज़ें आपके पास करने को है ना, एक तो ये कॉलेज लाइफ तो सभी को सिमिलर ही है। ठीक है, 10 साल मैंने भी, आप अगर आप बुक पढ़ेंगे देखेंगे, तो मेरे टाइम में भी यही होता था कि मैं क्या करूँ। ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू गेट द बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट जॉब, वांट्स टू गो इनटू हार्वर्ड, आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है, आप 10 इंटर्नशिप कर रहे होते हो, बट माय व्यू इज की जो लर्निंग है, ठीक है, जबकि चाहे वो टेंजिबल हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, उसको आप कैप्चर करते रहिए। ठीक है, पर्सनैलिटी में डालते रहिए, एंड डू ऑल्सो टेक टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ। ठीक है, ब्रेक लीजिए। तो इट्स नॉट, ये भी नहीं कि 3-4 इंटर्नशिप करनी है मुझे तो करें। ठीक है, सो अगेन आई थिंक गोल से सेट कर लो, मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, उसके माइलस्टोन सेट कर लो कि लेट्स से ये मुझे हेल्प करेगा ले जाने में। उसके बाद आप उस पे ट्राई करिए, कोशिश करिए। नहीं होता तो डोंट रिग्रेट अबाउट इट, बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी, और अगर हो जाता है तो मोर देन हैप्पी। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो मल्टीपल चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, उसको आप सेगमेंट कर लीजिए, एंड देन प्रायोरिटाइज़ करिए। अगेन एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर आपको हेल्प करेगा। प्रोडक्ट मैनेजर का भी काम डेली यही होता है। ठीक है, हमारे पास 8-10 टास्क आ रखे होते हैं और आपको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। तो आप उसको सेगमेंट करें, प्रायोरिटाइज़ करें, और उसके बेसिस पे जो आपको जो अगर मान लीजिए आपने कुछ इश्यू करा, क्रिएट हुआ, उसके लर्निंग से आगे बढ़िए, और अगर एवरीथिंग वर्क्ड वेल, तो उसका एक सक्सेस डिसाइड करिए कि क्यों हुआ। दैट विल हेल्प यू इन योर कॉलेज लाइफ एज़ वेल एज़ योर कॉर्पोरेट लाइफ। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप सेगमेंट, प्रायोरिटाइज़, एंड ऑल्सो डोंट रिग्रेट कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, एंड थिंक कि उससे क्या लर्निंग आपको मिल रही है। Yeah. any of the participant who wants to ask one-on-one question, unmuting themselves could ask that to sir या right now. आप पूछ सकते हैं, एंड अगर कोई म्यूटिंग में इश्यू है तो हिमांशु आपको अनम्यूट कर सकते हैं। Yeah, I'll unmute you. If you're having any question, you could ask या right now. ओके। Okay, Ringo is having a question, sir. Yeah. बताइए। Are you Ringo? Are you given permission to unmute yourself? हिमांशु, आप everything अनम्यूट कर सकते हैं। So I unmuted him already. No, sir, wait a second. Okay. तो तब तक कोई और है, कोई कैन आंसर दैट, एनीबॉडी कैन आस्क। Would you please try to unmute? You could do it from your side. आई थिंक कोई इशू आ रहा है। तब तक दैट्स ओके। आई थिंक एनीबॉडी वांट टू आस्क, पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि वी आर आल्सो ऑफरिंग एन इंटर्नशिप प्रोग्राम विद कीटो, जो हमारा पार्टनर है। सो एनीबॉडी हु वांट्स टू डू अ इंटर्नशिप विद कीटो, विल बी फ्लोटिंग अ फॉर्म ऑन द ग्रुप, और आप उस फॉर्म को के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दे आर आल्सो ऑफरिंग बोथ पेड इंटर्नशिप्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, एंड एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड कैन रीच आउट, दे विल रीच आउट टू देम डायरेक्टली।
तो अपना CV आप फ्लोट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको दे विल आस्क कॉल बैक। तो ये हमारा एक बोनस सेशन था जो आपको हम अप्लाई कर रहे हैं। या And about the giveaway, you were asking about the giveaway students. So for that, you need to tag Akash Kansal at LinkedIn or any other social या media platform, या and you need to read his post. and you can talk about why you want to read the book, or you can talk about what you liked about the session. And उसमें we are giving out 5 free books to the students, and उसमें से we'll also select 2 people for one-on-one sessions. तो ये आपको आज या कल में करना है मैक्सिमम, एंड देन ओवर द वीकेंड विल डू द सेशंस। तो आई थिंक अगर Hello, रिंकू आप sir. Yes, हाँ sir. बताइए। हेलो। Sir, I have a problem. Like, I can't decide what I have to do after 4 years on the college side. So, I'm just ओके, thinking to it. तो क्या व्हाट आर द Like, ऑप्शन what दैट should यू I हैव इन योर do? माइंड? क्या ऑप्शन है आपके, व्हाट आर द डिसीजन दैट यू वांट टू डू? क्या डिसाइड करना चाहते I हो आप? couldn't think of anything. I couldn't think of anything. I'm like that pointless, like aimless right now. Like, I don't know what to do तो सिद्धांत after मेरा 4 years on the college side. तो आई थिंक सिद्धांत मैं पहले बोलना चाहूंगा ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है, आई थिंक आई वाज इन योर कॉलेज, मैं आपके सेम कॉलेज लाइफ में मैं भी था। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है। तो आई थिंक बेस्ट वे वो होगा कि आप इसको लिस्ट आउट कर लीजिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चाहे आपको MBA करना है, आपको जॉब लेनी है, आपको लेट्स से यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, तो आप इसको लिस्ट आउट कर लीजिए एंड देन टॉक टू द पीपल दैट हैव एक्चुअली गॉन इनटू दैट डोमेन। ठीक है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली आपको उसमें क्या करना है। ठीक है, आपका उसका वर्क कल्चर क्या So, है, like, आपका काम I want क्या to है। do my own business or like, I want ओके, to go into my own business or तो startup. तो फिर आई थिंक अगर अगर So, आप डिसाइड कर रहे हैं कि अपना बिजनेस करना है, तो टॉक टू पीपल जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, टॉक टू पीपल जो कि अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम में तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अप टुडे। ठीक है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम एंड गेट ऑन एन आइडिया, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन। एंड कॉलेज इन फैक्ट इज अ गुड टाइम बिकॉज कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है आपके पास। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपको करना है तो कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं कर रहा, तो यू कैन ऑलवेज लीव इट बिकॉज बिजनेस तो आप ही का है। तो मतलब मैं सिद्धांत क्वेश्चन का आंसर यही बोलूंगा कि या तो आप डिसाइड कर चुके हैं तो उन लोगों से बात करके उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, और अगर आप कभी भी कंफ्यूज है तो लोगों से बात करके फाइनली टेक अ डिसीजन। ठीक है, कुछ कोई सही गलत नहीं होता है। ठीक है, और इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स हैं जो डिसाइड करके भी कुछ लेट से अचीव नहीं कर पाते, तो वो भी करते हैं कुछ कुछ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं ओनली व्यू कि आप कुछ डिसाइड करिए और उस पर रिसर्च करिए, एंड इफ यू आर फाइनली हैप्पी टू डू इट तो उसको लॉन्च कर दीजिए। दैट विल बी माय सजेशन टू यू, बिकॉज मैं आपके साथ सेम सजेशन में मतलब मैं भी रह चुका हूँ कि मुझे MBA करना है, मुझे स्टार्टअप करना है। ठीक है, मुझे IAS करना है, वो सबके साथ होता ही है। दैट हैपेंस विद एवरीबॉडी। या सो So, हाँ, is it there? I can hear you good background. Anyone else who would like to ask the अगर question? रिंकू आप अगर चाहे तो मैसेज कर सकते हैं अगर इशू आ रहा है तो, अदरवाइज आई थिंक तो आई थिंक खुद ये बेसिक्स हमने कवर करे थे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, बट हैप्पी टू बी इन टच विद द कंपनी विद योर LADC सेल। एंड अगर कोई फ्यूचर सेशंस करने हैं, हैप्पी टू डू दैट। एंड उसके अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। बट या आई थिंक ओवरऑल आई थिंक आई एंजॉय टॉकिंग विद एवरीबडी टुडे, एंड आई थिंक So, दैट्स one, we have one question from हाँ Madhav. बताइए माधव, या माधव बताइए। I'll unmute him. या Yeah, unmuted you. One sec, please. आप ट्राई करिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। हेलो सर। या बताइए। सर मैं अपना एकेडमिक मैनेजमेंट साइड में बनाना चाहता हूँ, तो मतलब रेज्यूमे किस तरह से बिल्ड करना है ओके, इंटर्नशिप के लिए? जैसे आपने अभी बताया कीटो के इंटर्नशिप के लिए CV या रेज्यूमे किस तरह से बिल्ड करना है? देखिए ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जो ये अप्लाई करवा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो अगर कोई आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, कोई लाइव प्रोजेक्ट है, आपने कोई ऐप बनाई है, कोई कोर्स किया है, तो ऑब्वियसली उसके बारे में आप डालिए। है ना, आपने कोई सेशन करा है, आपने कोई स्पेशल कुछ इंटरेस्टिंग अपने काम करा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, तो दैट इज वेरी रेलेवेंट। और अगर नहीं करा है तो जो भी आपने जैसे कॉलेज में काम करा होगा, प्रोजेक्ट्स करे होंगे, इसके बारे में डालिए। ठीक है, अल्टीमेटली देखिए कोई भी कंपनी आपको एनालाइज करती है कि कितना आपने काम किया है, क्या आपकी लर्निंग है, कितने लॉजिकल है आप। अगर आपने कोई लॉजिकल काम किया है, ठीक है, स्पेशली प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, या आपने कुछ डिजाइन किया है तो वो आप डालिए। ठीक है, तो CV इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन फॉर अ स्पेसिफिक रोल।
ठीक है, तो जो भी आपके रिलेवेंट पॉइंट्स है आप ऐड करिए इसको। ठीक है, आपके आईआईटी का एंट्रेंस है या आपने कुछ एग्जाम दिया है एनआईटी में, वो आप डालिए। ठीक है, या आपने कोई वर्कशॉप अटेंड करी है, तो आई थिंक सी ओनली थिंग इज कि उसके बाद यू विल गेट अ कॉल लेट्स से, एंड देन दे विल टेस्ट ऑन देयर ओन। क्योंकि अपने कुछ टेस्ट होंगे, वो आपसे बात करेंगे, इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, तो मैं मेरा सजेशन इतना ही रहेगा कि जो रेलेवेंट चीजें आप ऐड करिए, और अगर नहीं है तो वट एवर बेस्ट यू कैन ऐड वो आप करिए। एंड एज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजें आप ऐड करते रहिए ताकि सीवी बिल्ड हो जाए। बिकॉज टिपिकली जब मैं भी था, so I was trying to do a lot of work with societies, a lot of work with different college departments. तो वो जो भी आप कर रहे हैं, you can add that. ठीक है, anything that you add is helpful. And sir, Yes, sir. being a second year student, Rinku is asking in the chat box, what is the roadmap to get into product management, and the all skills required till second year to that position? So इसमें रिंकू मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्किल्स जो टिपिकली इंडिपेंडेंट है कि आप सेकेंड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, एमबीए में हो। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया, आपको अंडरस्टैंड करना है पेन पॉइंट, यूजर पर्सोना। ठीक है, कुछ स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे आपको डिजाइनिंग में, लेट वी कॉल एज फ्लोर टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो बाल्समिक है, या लेट से आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग। ठीक है, इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आप इस पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए। और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में है उसको एनालाइज करिए। ठीक है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, अमेजोन हो, तो डेवलप अ प्रोडक्ट थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट के इश्यूज क्या है, ये प्रोडक्ट क्या सॉल्व कर रहा है। ठीक है, एंड कीप ऑन डूइंग प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स। अगर आप कुछ कोर्स कर रहे हो तो हैंड्स ऑन वर्क करिए। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ना, अगर आप देखेंगे, कोई एमबीए नहीं होता प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, ना ही कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है। बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज नथिंग बट बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस को समझ सकते हो, डेवलप कर सकते हो, लॉजिकल हो, एनालिटिकल हो, तो उस केस में यू आर सेट फॉर डूइंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एंड कीप ऑन डूइंग इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स जो आपको मौका मिलता है। फ्रीलांस कर रहे हो, फ्रीलांस करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर एंड मोर हैंड ऑन वर्क। ठीक है, सो माई ओनली व्यू इज की कीप ऑन डूइंग एज यू गो अलॉन्ग। आज के टाइम में आप सेकंड ईयर में है, 2 साल है आपके प्लेसमेंट के लिए। थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप होती है, यू कैन ट्राई फॉर अ पीएम इंटर्नशिप। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, यू कैन ट्राई फॉर अ लाइव प्रोजेक्ट। ठीक है, कीप ऑन अप्लाइंग फॉर डिफरेंट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, एंड कीप ऑन डेवलपिंग मोर एंड मोर इनसाइट्स इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया आईआरसीटीसी का। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल था टीयर डाउन का। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट्स को टीयर डाउन करें कि व्हाट्सएप में किसके लिए बनाया गया है, ठीक है, जूम किसके लिए बनाया गया, जूम का पर्पस क्या है। तो द आइडिया इज दैट लेट्स से वी डू एन इंटरव्यू विद यू, तो आप बोल सको कि आपका प्रोडक्ट फेवरेट क्या है, इश्यूज क्या थे उसके। ठीक है, एंड देन वी विल गिव यू अ टास्क कि अच्छा ये डिजाइन करो। और व्हेन यू आर एबल टू डिजाइन, उसके बाद ऑफ कोर्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना था डिफिकल्ट नहीं है। तो आई थिंक डेवलप हार्ड स्किल्स ऑन वायर फ्रेमिंग एंड स्किल्स, काफी काफी हेल्प होगा आपको। या सो आई थिंक अगर any more questions that you have, you can do that. But I think I thoroughly enjoyed today the session. Gautam is having a question. He needs to ask it. हाँ बताइए। Hello, good evening, sir. Yes, I really enjoyed the session. Thanks a lot for this. thank you. And I wanted to ask a question like in product management, really important aspect is the customer review. So how do you go about like in a big startup, how do you go about getting customer reviews and validating which one is the right one for improvement in the product, actual product? Like which one is not a spam or like a diligent effort from the other competitors? So see, को typically इसका जो मैनेजमेंट अब हम कहते हैं, that is called focus discussion, focus groups. ठीक है, so we try to identify to the detail कि हमारे customers कौन है। मैंने से डिटेल मतलब उनकी एज, लोकेशन, ठीक है, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके प्रेफरेंसेस, उनके स्पेसिफिक हैबिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन उसका सेट चूज करते हैं। नाउ इफ दिस सेट, ठीक है, लेट्स से हमने 50, 100, 200 लोगों का सेट चूज किया। उसके बाद एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग का। ठीक है, तो लेट्स से आपने बोला स्पैम। ठीक है, तो लेट्स से ग्रुप 10 लोगों का था और 6 लोगों ने कुछ और बोला, 4 ने कुछ और बोला। तो हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं रहेगा बिकॉज वो 30 के नंबर से कम है। तो हमारे केस में स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग का एक टर्म होता है, तो 30 से जो नंबर कम होता है उससे कोई रेलेवेंस हमारे लिए नहीं है। 30 के बियॉन्ड, ठीक है, इफ यू सी अ ट्रेंड कमिंग आउट स्पेसिफिक वेरी वेरी प्रोमिनेंटली कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है और इससे ये निकल के आ रहा है, तो हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अगेन कस्टमर जो बोलता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कस्टमर करेगा। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल को सर्वे किया, आपने कोई मार्केट रिसर्च करी, तो आपने क्वेश्चनर फ्लोट करा।
ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो आपको वही करेगा जो आप वो बोलेगा, ठीक है। दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द ओरिजिनल कस्टमर ऑडियंस जिसको आपको टारगेट करनी थी, ठीक है। तो टिपिकली व्हाट वी डू इज कि हम उसका एक सैंपल उठाते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, उसमें एक ट्रेंड निकालते हैं। अगर वो ट्रेंड बहुत प्रोमिनेंट है और स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग से प्रूव हो जाता है तो ही हम उसको पिक करते हैं। और सी द पॉइंट इज कि कंप्यूटर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी सेम ही सेगमेंट में मतलब काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हम भी जानते हैं कि लेट से कुछ डिविएशन आ रहा है या उसने कुछ डिसरप्शन किया है, तो वो हमें ट्रैक करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंप्यूटर ने उसका एक कंप्यूटर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, बट लेट से उसने कुछ अच्छा फीचर बनाया है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम अंडरस्टैंड करें उससे क्या फीचर में क्या बेनिफिट था और उसको अपने लिए पिक करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर मैपिंग एनालिसिस चलता रहता है। बट इसके अलावा जो मार्केट रिसर्च और सर्वे और फोकस ग्रुप्स है, ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी तो हम करते रहते हैं। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट है जो आजकल चल रहा है, वो है मिस्ट्री शॉपिंग। आप एज अ कस्टमर अपने वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, आप इंटरैक्ट करिए, और व्हेन यू रियलाइज कि एज अ कस्टमर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको काफ़ी लर्निंग्स मिलती है एज अ कस्टमर, नॉट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। क्योंकि आप प्रोडक्ट मैनेजर की तरह अपने प्रोडक्ट पे थोड़ा सा ना, इट्स योर बेबी, तो कई बार आप उसको थोड़ा सा लीनियरली देखने लगते हो। बट एज अ कस्टमर पीपल आर वेरी कटथ्रोट। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। तो कस्टमर से बात करना, टच में रहना, फीडबैक लेना, सर्वे करना, और हमारे कॉन्सेप्ट होता है एनपीएस का, नेट प्रमोटर स्कोर का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वी टेक अ रैंकिंग आउट ऑफ 10, 0 टू 10, एंड वी कीप ऑन ट्रैकिंग की एनपीएस कितना आ रहा है। अगर एनपीएस हमारा खराब हो जाता है, इसका मतलब है कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, और टिपिकली लार्ज वॉल्यूम के बेसिस पे भी डेटा मिलता है, देन वी टेक अ डिसीजन, देन वी डू द रिव्यू कि अच्छा इशू क्या आ रहा है, ठीक है। देन आज के टाइम में तो ऐप रिव्यूज भी आते हैं, अमेज़न पे रिव्यूज आते हैं, तो बहुत जगह डेटा मिल जाता है हमें कि इशू क्या है, या। तो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग और फोकस ग्रुप्स आई थिंक इज द राइट आंसर, जो आपको हेल्प करेगा इन योर रिसर्च एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डिस्कशंस। Yeah, and Thank to you, it, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। and for the journal doubts, like for the internship of keto, that will be posted in the group. And या for the giveaway of 2 sessions, you need to tag sir with या according to your that LinkedIn, and you have to also write a review like for that वी कैन after टॉक it. अबाउट द सेशन, व्हाट यू लाइक अबाउट द सेशन और अबाउट द बुक, एंड उसमें से 5 लोग को गिव आउट द बुक, जो भी टाइप करेंगे आज या कल में। एंड इसके अलावा जो उसमें से 2 लोग अच्छा बेस्ट लिखेंगे, विल गिव देम द सेशन ऑफ 30 मिनट्स, ठीक Exactly. है। And please could you turn on your cameras for a screenshot to post in our college page, and even that if any या if ऐसे everyone अगर लोग ओपन कर सके, अदरवाइज अगर को अपने, yeah if everyone who is comfortable to या on the अगर camera. अनलेस कोई अपने बाथरूम में नहीं बैठा हो तो कोई इशू नहीं है हमें, All ठीक है, right. तो कहीं से भी कर सकते हैं आप ओपन, ठीक है। तो आई थिंक we enjoyed the session, Himanshu. Thank you for arranging it, and Yeah. great to interact with people of NIT Jalandhar, and I open for future sessions in the beginning, जो आपको help करेगा in the future. Yeah, I thank you, sir, for coming here, and we, the team of LADC, will hardly, congratulate you for this book and for the great achievements in your life as well. You Thank you. have taught us a lot in this session, and the students are connected. And thank you so much for this Thank you session. very much. Thank you. Yeah, All right. you can take this screenshot, Yeah, and please, guys, on your cameras, then yeah, you could on. No problem. Madhav and Gautam is there, तो Yeah, Aditya is there, Gautam. ठीक है। So ठीक है, I think we can take the screenshot. And folks, thank you for joining. And for internship, I will float the form on the group only, just in a minute. ठीक है। And इसके अलावा जो आपके doubts हैं, you can reach out to Himanshu also. And we are Yeah, happy to do more sessions. any of the doubts, you could reach out to me on my personal number as well. I'll be delivering you the Yeah, solutions for yeah, that. yeah. And thank you, sir, for connecting Thank you. once again. Thank you very much. Uh, Thank you, everybody. And I Thank you. want everyone to read this book at least once because it's on your college life, and you will be having a wonderful life of it after reading this book. Thank I'm you. very sure of that. I've read Thank you, this. Himanshu. Thank you. Okay, Thank all you. right. Bye. Thanks.